You can see my screen, right? Yeah, it's audible. Sorry, visible. Yeah, fine. So the current dashboard, which you can see, this is the Ariba spend management dashboard. You are also must be aware on this. So these are the completely the dashboard of the Ariba, right? Yeah. And here you can see this is the home page of yours, and here is the supplier of tabs, and this is supplier management. So basically, when we talk about the SLP, right? So SLP, basically about the supplier registration. It's a complete supplier registration process. So once we start from the SLP, let me open the notepad. I will explain the notepad as well. You will get to know this one. And one more thing, Neil, if you can remove or put your this right side, right, that logo is coming. Logo in the sense your name is coming. If you can, it's not Okay. clear on the right side. If you can drag it somewhere else, name. This Yeah. test name you're saying? Yes. Yeah. So right side, I'm not seeing anything actually. I'm only seeing your name in the big black box. So that box, if you can remove or you can drag somewhere or you can reduce the size, if it is allowing you. Okay, Otherwise, fine. I just reduced my size 75%. Is it fine now? Yeah, it's fine. No, no, not about the font size. On the right side, the box is coming right where your name is displaying, Neil Kamal. So that box I'm referring. I think my name is. I think I'm sharing the revised screen now. What about you, Yeah, Suraj? I'm seeing your screen only. What I'm Yeah, saying that on the right side where we are getting this exit, yeah, where you click right. yeah. So before to that, I'm getting the box of your name mentioned. So Uh, that can be that you can drag it somewhere. Is it possible? I don't think so because 1 second. Can you send me the screenshot if you can send me what exactly you're saying? Srijan, Suraj, I'm sending in the WhatsApp. Maybe, yeah, maybe some issue from your side. It is like Kazu, because I'm also not able to see anything like which you are referring. Wait, wait. I just It's sent a you. clean. Just check the WhatsApp so that you will get to know. This is yeah. I sent you. You Yeah, got I it? can see it. Can you send the full screenshot, full screen share? Okay, like the other screen, what it is showing? Like it is showing you the Ariba screen, or what it is showing? Yeah, Ariba only. No, no. Everything is working fine. Just the right side portion. It is taking the That big box. logo, because yeah, because that logo I'm not getting. Can you leave the Oh, meeting and you can join it again once? just a minute, sir. Let. Okay, okay. Sorry, sorry. I think that's my fault. I am the culprit here. Yeah, I have just minimized it. We don't. Sorry, Nilkamal. We don't use Zooms. We Yeah, only prefer Teams. teams. Absolutely sorry, man. Sorry. Okay, no problem. No worries, no worries. And you can increase the font size. You put 75%, right? You can Yeah. back to 90 or 100. Yeah, much better. All right. Okay. Fine. So, so this we are talking. You are also compatible with the Hindi language, no problem, right? By the हाँ way, where? चलेगा 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 मैं नैनीताल का हूँ उत्तरांचल का हूँ अच्छा उत्तरांचल ग्रेट ग्रेट टू हियर हम्म, उत्तरांचल आप सही कहाँ के हैं? मैं इधर बैंगलोर में इट्स बैंगलोर में हूँ अभी मैं फिलहाल अरे तो मैं आपको पकड़ सकता हूँ मैं भी बैंगलोर में ही हूँ मजाक कर रहा यू कैन रीच आउट टू मी नो प्रॉब्लम या ठीक है तो ठीक है स्टार्ट कर देना बेसिकली क्या होता है ना दिस एस एल पी ना हूँ it's all about your supplier registration and this supplier registration start with your supplier request actually. So this supplier request is nothing, it's an internal form. Once you open now, 1 second, let me start with the creation of this one. See, this supplier request form is a internal form actually, and that raised by the buyer. तो ये क्या करता है कि buyer एक request डालता है to get the supplier onboarded into the system. ठीक है, तो suppose you are the buyer, right? And आपको एक ओके supplier को onboard करना है. You are the category lead of that. Suppose you are doing on category management, so you have to onboard one supplier. So इसमें क्या करेंगे कि हम मान suppose given the name Srijan, I just Srijan with the supplier Srijan Institute.
फाइन. सो ये सप्लायर नेम डाला हमने. बेसिकली क्या होता है ना, ये जस्ट वी जस्ट गिविंग दैट कंफर्मेशन वी आर ऑनबोर्डिंग द सप्लायर. काइंडली click of that link and get back to the your registration questionnaire. तो through this internal supplier request form ना हम just intimate करते हैं आपके जो बायर्स होते हैं ना, उनको बायर के थ्रू जाता है सप्लायर को, कि सप्लायर को हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं. दिस इज आल्सो गो इंटरनली टू योर अप्रूवल. That is your procurement manager, he will approve, or we want to onboard this supplier, if we want to approve this supplier. So this will go like this, right? So what you will do, you'll put the supplier email id or whatever you have collected from other guy, yeah, each of the it may be the internal as well, right? So आप ये email id यहाँ पे डालोगे. Suppose I'm putting my email id right now. ये डाल दिया, सप्लायर फर्स्ट नेम कुछ भी डाल दिया, मेल कर दिया. ये जो ये स्टार मार्क देख रहे हो ना, these are all mandatory field, you have to fill it. Without you cannot proceed for the supply request, right? So these are the mandatory field, you can say. So these are the Okay. basic information. That's you are just initiating this request to onboard this supply, right? So now you'll put that these are all non-mandatory field. If you want to fill, it is not mandatory, right? So here, suppose you also know that which category he deals with, right? So you can also, for now, I'm just taking all categories. Suppose you want to select any of the particular category, you can select here from there. From Amazon one, suppose you are onboarding the supplier for April, yeah, right. You can do the same So things. this one, so this portion particularly deals with the Yeah, supplier's business. yeah. Okay. It is basically, see, suppose I'm actually I have to purchase 10 laptop, right? And now Okay. मुझे जो 10 laptop चाहिए ना, so I will send this request to the many supplier, right? One time you can also send a bulk supply request. Yeah, one time also you can send to which supplier you have a contact list, right? Suppose you have a contact list for the IT and software supplier, so then you will select this category as a IT software and this category actually. Right. So Okay. post selection of this category, but currently I'm selecting the all commodities because we Okay. are just testing this site, right? Okay. And for which region you are operation, so you can also select that ASEA, APAC of Pacific, if you are doing, if you are doing from another state or the country, so you can also Mhm. do this. So I will select ASEA, that is APAC, right? Once we submit this request, now it will directly go to this email. It will trigger to this email, which email I have kept it here. Right? What about the fourth one, Nilkamal, supplier account group? Like, can we put anything or it's specific Yeah, to? this is also better. Sorry for this one. This is your create vendor in the number assignment. This is also important thing. This is the mandatory question. This is the actually for at initial level it is not required for now, but this Okay. internal form has been designed in this way actually. So they have designed this way. So it is mandatory for it. It is so you can Okay. this from the template point of view. Once you go to the template, you can design all the questionnaire from your side. Once you jump into the template, we'll see how the questions are getting configured, how the sections you are creating, how the fields are getting mapped actually, right? So this request form is coming for your templates, which is already published in the system right now, right? We have not taken any modification, we have not made any changes, right? So this one I'll just submit it. Okay. So these informations are coming from the template. So that template, supplier onboarding teams take care of that, right? Yeah, see, so no, not supplier onboarding team. This supplier, the template is completely the admin part, not for the supplier Okay. admin. Yeah, it's a completely the administration team, right? Suppose you are the functional consultant, right, and you are having the role of admin, so you can manage those template, and the templates are not generally every time it is getting published. It is only one time. Suppose Okay. you are dealing one of the client and he just proposed these are my questionnaire, you have to fix this all questionnaire in one template. This is simple language, right? So you have to first give the general information of the supplier, then primary contact of the supplier, then what is the additional information, contact one, contact two, whatever the details you wanted to. Client will give you this requirement, you just configure in the template. That template will be one template, right? So I will show you on the template side as well. First of all, we'll see that uh, Okay. overview of that template is a different, right? So now you can see here, this region institute is now in the approval. Hmm. I told you this is the internal approval, this is not the outer approval, it's completely the internal.
So we'll Okay. click view and we'll check that where this approval is pending right now, right? You see, so Yeah. this is pending with that approval. You can also minimize this approval. You can also customize this approval as well. So suppose I'm in the while I'm designing the templates, I can also put my name in all the team success roles, right? So I can maintain all Okay. this request and the same form. Here you can see approve, deny, and the request additional info. Suppose your approval, right? You are onboarding the supplier. Your manager asks me, no, I need some additional details. So he will create this request for additional info, and he will ask you for further details. कि मुझे अपनी Okay. details चाहिए मुझे इसमें this I cannot Oh, approve it with these details, right? Suppose you are in hurry actually to onboard this supplier, okay. Okay. Uh-huh. and some details are missing. So he will request info. He will send it to you by clicking this request of info. Either he does not want, then he can also deny by giving some reason. Why I'm denying the supplier? Because we have already taken the approval of another supplier. We are taking the another supplier. Then he can give any reason now. Once he's okay, he will click the okay. Okay from my side, right? And he will confirm that approval. Now you can see that this task action has been done. Now it is go for the next approval. If there is a next approval for this, you see, this is approved. Now the status becomes approved. Neil, quick question. You mentioned, right, if we opt for that request for additional information, something like that. Yeah. So, in case if we opted for that option, so Hmm. will it impact the template or will it impact only this particular questionnaire or whatever? No, no, nothing will. There is no relation between from here to that template because see, this is Okay. your internal form actually. This is already. Okay. This is see this is coming. These details are coming from the template, but nothing will change in template because template is admin. Okay. And Okay. what happens in Ariba now, there is everything, it depends on the templates actually. Whatever the templates we have already designed, right? And we Right. have already kept it separate in the store, right? So we don't need to change anything in the template side. We don't actually touch the template. Whenever Okay. client ask you for any of the customization, that is your implementation time, right? So that enhancement will do with the template, then it will publish for one time, and this request will go for all of the supplier for one time. There is no Okay. sending this one supply to this template, no, another supply to this template. That is not required for at this moment, right? Okay. Okay. This is your internal for whatever the details you are communicating internally. That's all. Okay. You see, that's this is the SM vendor ID is now generated. You can see here, and this is the your Ariba SLP number, and this is the temporary. This is the permanent number of this supplier. For now, whenever you go for searching, you can just copy this name and copy this name. Yeah, this ID. You can search this supplier. Suppose I'm here. I'm just putting this number. See, you can find your supplier. Just now we have just created this request supply request form, right? And let me tell you these things. So this ERP vendor ID, you see this ERP vendor ID is a temporary vendor ID. You can say this is not your Mm, permanent vendor ID, right? mm, mm. Because what happened whenever you design, I'm telling you the depth. So whenever you feel any questions, you just raise it, right? Because this is not you can ask anything if you have any doubt, right? Yeah, So definitely. तो ये जो ईआरपी आईडी होता है ना आपका, ये आपका टेम्पोररी आईडी जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि जो सप्लायर हम लोग आपको एस4 सिस्टम में भेजते हैं ना, वो सप्लायर दैट Mm, सप्लायर इज फॉर द इंटीग्रेशन, राइट? सो वी विल सिंक द सप्लायर from the ERP. Here you see, we'll get that option. Here I can don't see this sync the supplier because it's a auto syncing mode is on, right? okay. So Okay. once it will sync, this number will once the registration Mm, will completely done. So this number will be become as a your ERP original ID. That is your vendor partner ID, right? okay. And Okay. this ANID you are what you are seeing here. This ANID is not available because it means this supplier is not registered on your Ariba Thank you. Mm, network itself, okay. right? Means Yeah. once this supplier will be registered, this number will be available here, right? It means what it says, because this is the new supplier, we are just sending this link to suppose there is a two options. Supplier can also register his sale if he wants one time service only, right, with you. So he will not register completely, he will just participate in the event, he will just participate on the functionality and he will leave it, right?
because he is not going to for long term vendorship and all that. Once he is required, because once he register in Ariba network, now he has to also pay some subscription fee for this one Right. equipment, right? Once he will be Right. available on Ariba network, he can communicate to many of that buyer, many of the supplier itself. He wants whatever he wants. From that buyer and supplier point of view, he can do it. So this number. So there Now, is no there is no link between, or there is. Let me paraphrase the question. So there is no compulsion that if customer, by customer I am referring to buyer, if they are going for SLP, then they mandatory have to put their supplier on the network, Ariba network only. That is completely different. It can be, but it cannot be also, right? मतलब ऐसा कोई लिंक नहीं है कि अगर वो कस्टमर उनका एसएलपी यूज कर रहा है, राइट, वो सबको फोर्स करेंगे कि तुम नेटवर्क अरीबा नेटवर्क यूज करो, राइट? हेलो, हेलो, सूरज, आर यू देयर? Yeah, I'm here. I can hear you. आई थिंक ही जॉइनिंग, आई कैन सी, आई थिंक इज सम डिस्कनेक्ट. Yeah, maybe internet issue. तो ये भी यहीं बैंगलोर में ही है, सूरज? हाँ, बेंगलोर में ही बताया हमने। चलिए, अच्छा है. हाँ तो एक बार आप चेक कर लो इनसे व्हाट्सएप में. हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। वाईफाई में कुछ इशू हो, रिजॉइन कर रहे हैं इसलिए होता है। हाँ, हो सकता है. ये टाइमिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, सूरज? हाँ, अगले मैंने हफ्ते बोला से. था इस क्लास में, हाँ मैंने बोला था इस क्लास में जो है हम डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग का भी। आप एक बार अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा कौन कौन हाँ, से टाइम के लिए भी सूटेबल हो सकते हैं और आपके लिए भी, तो म्यूचुअली वो आप डिसाइड कर लो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है. मैंने बोल दिया था वैसे कुछ भी। ओके. तो इसका ये रिकॉर्डिंग का सेशन आप मतलब सेशन के बाद देंगे, राइट? आई थिंक नाउ ही जॉइंड. हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग है आज वाली, इसका सेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट सेशन की जो होंगी वो सर ही आपको प्रोवाइड कराया करेंगे। ओके, ओके. hello. Yeah, या नील. hello. Sorry, my network got disconnected for sometimes. Or yes, light is It's getting off. fine. Sorry No for that. worries. I'm just saying now. Yeah. Yeah. So Neil, what I was asking, like there is no link, direct link between, if a Hello. customer is, hello, am I audible, right? Yeah. 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 You are audible. You are audible now. Yeah. What I'm saying that there is no link between SLP and the network, in the sense that अगर customer SLP यूज कर रहा है, ठीक है, Hmm. तो वो ऐसे कुछ मैंडेटरी, दे कैन नॉट फोर्स द सप्लायर टू यूज अरीबा नेटवर्क आल्सो, राइट? Yeah. बिकॉज, Absolutely. Absolutely. Yeah. right, okay, okay, so this SLP can be used for other platform, for other thing also, right? Absolutely, absolutely. This means suppose you have the event, right? You have a big event, right? You have to set up the admin part completely. Now you're looking हाँ. for thousands of supplier. There is a millions dollars business you have, and आपको क्या करना है कि उस 10,000 supplier को मेरे को request भेजना, which give the best quote, I will go with them, right? And the system will decide which is the better quote. राइट, तो इस केस में क्या होगा ना कि ये सप्लायर भी चाहेगा कि आई विल आल्सो रिस्पॉन्ड एज मच एज अर्ली पॉसिबल, राइट? सो व्हाट ही विल डू ना, if he intends to participate this Ariba network, right? So he can register himself for one time. Suppose he wants to go for the future time business. This is not a mandatory, but while he will set up the contract and everything, right? So this network might be required because he will see now, okay, I have to do the long business because I'm setting the contract for 2 years, 3 years, 5 years, right? To provide these all Hmm. items continuously. Then in this case he will register himself. But for the initial participation and response to the questionnaire, this is not at all mandatory to get this registered Okay, at level the Sariba network. Yeah. okay. All right. So now you can see here the context pass as well. You can see my name. I have also given this contact pass. You can also, if supplier, if somebody asks you, add my name also. Suppose I am also, I can give your name. I can add your email ID as well as a contact pass. So you will be also the
to you can view this contact part as well, right? You can view the supplier. If I add your name as well, so you can also access the supplier. You can also take this feedback of the supplier, what is going on, what is the update of the supplier, because this will notify you every time. Once I will add you here, right? And you can Okay. also make him as a primary contact. Suppose you are on leave now, you want to access the supplier, so you can also make it as a primary contact. He will also look into this your questionnaire part in absence of yours. So Okay. as much as you can add your contact here. So now coming to this is a very important thing. See the ERP data. This is basically what happened. Whatever you details you see, right? These are all the ERP level of data. Means this data is available in ERP site. Means this integration is going to happen with ERP. Whatever the data you see in the ERP data, it means it is talking about your S4 system. It is your S4 HANA system. It is your S4 ERP system, right? So this system is all details is about here. So whenever you will see that template side, no, so how to configure this all questionnaire, right? This all fields mapping and everything. So we'll check over there. So how this is going to happen, how you map the field. That is very important for the consultant. Who is doing for the integration point of view, right? As a implementation you are suppose you got a chance to implement something, suppose you got a chance for SLP Ariba implementation end to end, you are the responsible only, so you need to know each and everything, right? Not only for designing the templates, you need to how to map the field, how to map the data from the CIG level. So that is all about you. So you have to take all the responsibility for the integration. But from AMS point of view, that template side is not required from your side, because template is not the AMS things. Because whenever you go for the template is not permissible for you. Whenever you support the AMS project, whenever you go for that integration point of view, then you need to get into the template side. These are all questions are proper aligned with that, and what fields enhancement is required, that we can do later, right? So ये एक ये AMS फुल फॉर्म क्या हुआ? it's a application management system. uh, ओके ओके गॉट इट, सॉरी सॉरी, गॉट इट, ओके. इस एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है ना कि जो भी टिकट्स आपका होगा ना, वो आपको एक पोर्टल पे आता है, और वो टिकट को आपको एक्सेस करना है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड द टिकट। सपोज सब दिस सप्लायर बायर ने रेज किया, जैसे आपने रेज किया इसको, और आपको इशू आ रहा है कि आई एम नॉट एबल टू लिंक दिस सप्लायर, आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर, दिस अप्रूवल इज नॉट वर्किंग, राइट? सो कुछ भी इशू आ सकता है, जैसे कि ये अप्रूवल हुआ तो ये अप्रूवल इधर नहीं दिख रहा है, तो एनीथिंग दे कैन रेज टू यू। एंड एज ए एम एस ओके टीम, जैसे कि हम लोग जैसे एम एस टीम में रहोगे, तो आपको वो सपोर्ट करना होगा कि व्हाट दिस एरर आई एम फेसिंग। सो ये एरर को आपको रिजॉल्व कैसे करना। सपोज देयर इज अ ओके. द इंटीग्रेशन गॉट फेल्योर ड्यू टू द बैंक इशू, ड्यू टू द कंपनी गॉट इशू, ड्यू टू द परचेजिंग डेटा इशू, आपका इंटीग्रेशन फेल हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एरर एंड यू हैव टू फिक्स दिस एरर and within the timeline. Suppose one ticket gives you the 4 hours, so you have to respond at the 4 hours. It is based on the priority 1, priority 2, and priority 3. So you need to Yeah, address those. understood. Yeah, yeah. All right, so these are the things. So now this these are completely the ERP data. You see the from the template point of view, whenever you map all the fields. So I'll show you how to map this field. Suppose Okay. some you can also ask me one question like suppose somebody asks you, does SAP Ariba load the data itself? So what is your answer? What do you say that? Suppose It somebody asks you. should not know. It should Yeah, be a migration project, right? yeah, From yeah. custom to ERP, Yes. whether brown field or green field, whatever, depending on. Yeah, yeah. Basically, yeah, Ariba actually does not store any data, and Correct. that's it. And the storing of data, you can say that like a document type. That is the basic things, right? Document type, Hmm. your purchasing info, that kind of data you can store on the cloud side. That will by default it will store, right? But whatever the main data is there, that is in ERP side. That's all. So completely on the ERP side. To this certificate also, you can also add the certificates. This questionnaire, this certificate is not available for this supplier particular. You can ask your requirement if you want. This activity log, this is very important. Whatever the action you take, this will show you, right? If I make any changes, if I do anything wrong with this wrong with this supplier form, so this will display everything, each and everything. Suppose right now we have just initiated a supplier request, right? Once we'll go for the supplier registration, it will also show the supplier registration itself, whatever the changes have been made, right? These are all the details, you can see it here. This all details, everything you can see it, right? So while doing troubleshooting, I think this tab is used, right? Absolutely, absolutely, absolutely. This activity log you can look into the sourcing project as well, but there is a log kind of thing. This activity will be not mentioned, but the sourcing log will be there. So I'll show you later on this part as well. Right? This is again the risk of the supplier. This is also you can
no, for fill the form, this is what is the risk of the supplier. This is completely different thing. This is whenever you go with the supplier, it's a long term business you are doing, then we can you can configure the template in this way where you can mention this supplier is on high risk, this supplier is on a low risk. It is based on the questionnaire, whatever the questionnaire you are going to set up in this supplier registration. This will decide you how they are providing the data. No, so based on that evidences, you can evaluate the supplier performance management. That is your scoring part. This is a different tablet, so SPM. So I will discuss it later as well, right? The SPM project. So I will show you how to risk and everything's get done. So and this is your business activity. You can the same thing, the business event, whatever the events you can see. And over the summary, you can also see. Suppose here you can see there's no right now there is no event, right? You see there is no event. Suppose right Correct. this event means there is no event for now. If he's the supplier participate the event, you can directly access from here only. You just open this one and it will navigate to directly sourcing request and sourcing project. Whatever the contracts you have, this way you can directly navigate from here. So these are all of supplier. Now we'll proceed for the registration. Now see, there is a thing invites region institute to register to start internal registration on their behalf. You have a two option, right? Either you can register himself from your side, and you can also ask supplier to register from their side. This means what will happen, this means you have all the data from the supplier side through the email. That is the offline mode, right? So you can store all the data from the email itself and you can start the internal registration, right? Now if you don't want to send, then you need to send this to invite to the supplier. So suppose I click invite here, so it will go to the supplier directly over this email itself. If I don't, if I cancel it, if I start internal registration, it will start your internal registration. You are doing the supplier registration on behalf of that supplier. This is all about this means. See, Okay. Okay. since supplier, so which you want to proceed? Do you want me to proceed the internal, or you want me to proceed with external one? Your guru, sir. No, no, no. I'm, Yeah. So yeah, what is what this? are the best practice? So best practice क्या है? Like internal, क्योंकि usually what I have seen with Amazon, Hmm. they go with this invite only, and then we'll get lot of troubleshooting issue. Absolutely, absolutely, and that is very, very, good thing, because see, if you do internal registration, that will also create your compliances issue, right? Because see, Hmm. you have to provide all the detail from the supplier side. You are not the supplier, you are just the buyer, right? So better you need to send it to outside of the business. Best practice is to send to the supplier email only, not to others. Now I'll send it this questionnaire to here. See, now registration invitation is in progress. Once it is complete, you can view the registration details. Whatever the details you want to see, you can see it here. Now just refresh this screen once. You see this approval matrix. You see whatever the approval matrix is here. You can also configure this approval matrix. Suppose you want to give only one level of approval, two levels of approval, five levels of approval. You can customize it from here itself. Means from the template you can fix this approval, but here you can also you see there is an advanced view in the right side of your screen. You see the advanced view here. You can customize your approval here. Once you open this advanced view, you see this 360 view of this profile, right? You can see all the overview of details of the supplier. This ID is also this assigned to this document number. This supplier is name. What is the status of this supplier? This is invited right now. I mean, supplier how now invited. Registration source care. This is the external, which you just discussed that this is the external one. So this is source external system and all that. So now you come to the documents. See, in the supplier registration, you see that there is a two document. One is for internal registration questionnaire and another is supplier registration questionnaire, right? This internal registration questionnaire basically we fill from our side to integrate the system, right? It means it will what we'll do we have to fill our fields like we have to match your field from the S4 ERP system, right? So you will just fix some field of the here while designing the template. So you will fix the suppose this purchasing Incoterms bank, these fields are required to mandate, so these fields will manage from here only. This is your internal registration questionnaire, right? So this will first design this template in this way. So this whenever you go for the supplier registration question, we always get the supplier internal registration questionnaire itself along with your registration. This see, and this time is also given for 28 minutes for this supply. It means we can also extend this supplier
Suppose here we'll extend this supplier where this, I can pause extend timing here. So I'll just extend it for times, minute, hours, day. It means this supplier registration questionnaire will be open to the supplier for a specific period of time. Suppose I'm giving 1 day, right? So this questionnaire will be open for 1 day for now. Okay. Now it is for 1 day. So he can access within the, he has to respond within the 1 day. Otherwise, this questionnaire will be closed. Once this Hmm. will be closed, he will come back to you, sir. I cannot participate in the event because I don't see that event participation and all that. So he will come back to you. So in this case, what you have to do, in this case, you have to open this questionnaire again, coming back to the same process. You have to just come here and you have to open this event again, right? You can open from here. So let's go back here. You see, this is supplier registration. Now this is the main registration questionnaire. This has to be filled by the supplier only, right? So what he will fill, this is the screen of the supplier. You can see, I can see as a view, as a, this is the Citizen Institute, right? I will see as a, from the supplier side how it looks like that. So supplier will see this such kind of page. You see, supplier, this is the supplier page completely. This is the supplier page. You can view from your side. This is the Ariba functionality, right? You can view from your side as a supplier, act as a supplier. You can also do it. So you can see this is the supplier. You can have to fill the city name. Suppose I'm filling the city name Bangalore. These are the mandatory fill. You have to fill this all the Bangalore. I have for this 756 double zero six seven. Wherever asterisks are there, it's mandatory, right? Red Absolutely, color. mandatory fills. Got it. India. And So these mandatory fields like can be customized, like if absolutely, you absolutely. want. Okay. Yeah, yeah, you can customize. These are, see, does this questionnaire, this supplier request registration, your qualification, your preferred supplier, these are all templates, and these are all coming from the template itself. As I told you earlier, there's a template is published for one time, right? That Hmm. not go again and again, and you can update your template. You can update your questionnaire from here itself. Means you, if you don't want, if, and this will be, this is the client based template. Suppose you are working for Amazon, right? Amazon has decided this is the final templates we have. We'll share this template to only suppliers. So this is coming from your template itself. If Amazon said now we have to for all the supplier, for thousands of supplier, we have to manage our supplier registration questionnaire in different ways. So he will propose you the question, propose you that questionnaire. Okay, what are the questionnaire to assign here? So you'll go to the template that time, and you will check first in the test system. As you can see, this is the test site, right? You cannot directly go in the production and test. We'll first test in the test system whatever the question you wanted to add. You want to remove this guide, these are the mandatory questions: supplier legals, name, registration address, email address. These are the mandatory, you have to fill it, right? So you can customize your question as per your requirement, as per the client business requirement, not from your requirement, from the client business requirement side. If supplier asks, client are asking for, I don't need to see that you know this additional information field, I don't want. So you, what you will do, you go to the template, you will just click on this template, and we'll just edit this template. I will remove this additional information template. So this field will be not visible to the supplier once you publish the template. And once you publish the template, this field is also not visible for all of the supplier which you are sending this as a supplier registration form, right? So I'll Okay. just end this preview, and we'll go back because this is a supplier list, right? We'll act as a supplier now. So these are the participant which I have just participate email ID. You can see participate invited by, you can see everything, you can see here. Now we'll see, did I receive the email or not for that registration. We'll check here. Here I can see this registrations. What are that? Now this is the supplier email. You can see this supplier email is here, right? Register to become a supplier and professional test. What he will do, he will first, he will create this account because he is not I available mean, in this. I'm only seeing your this Ariba page, customer realm, Oh, sorry, sorry. All right, it means I need to reshare this screen again. Just one or second. you can drag it. I think. Yeah, yeah, one second. Get because this Zoom things, that is something. Yeah.
I can see your this email. If you are talking, you are on mute. No, nothing is audible. Yes, now audible. One second. Yeah, it's audible, right? Okay, fine. Yeah, So you can see here. Let me share my entire window here. One second. yeah, I can see. Yeah, I can see it. So this is the email. You see, this is the email you will receive from the supplier's side act as a supplier, right? So you Yeah. see, here you see, hello Neil Srivastava, professionals. Now, who has invited you? So you, as a buyer, you have invited it to as a to get it registered in the account. So once you click in this create account, see, there is a two option you will see. Either you have to create a new account, yeah, use existing account. If he has already the account existing in the Ariba, right? Because see, the initial what happened at the time of registration, he will just create account, but he will not subscribe that. He will create account means he will just give the information to by creating the accounts. Now I am on Ariba side and I'm able to participate now. If he is already having the account, he will just click on use existing account and he will log in as a existing account. In this case, I have not created my accounts for my name, so So I'll just yeah, so Neil, इस केस में अगर वो they are using their existing account, so that they ANID can, will populate there. और yeah. अगर if they use a new account, it will be a new ANID, right? Dummy ANID. Dummy in the sense not the registered ANID, correct? Yeah, that is correct, that is correct. हम लोगों को Basically, बहुत सारा इश्यू आ रहा है अभी एक्चुअली कि बहुत सारा अनरजिस्टर्ड अकाउंट क्रिएट हो तो रहा है. आई थिंक दैट इज द इश्यू. हाँ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो ना सूरज, उस केस में आप जो सप्लाई पहले आप चेक करो उसको, अरीबा बायर नेटवर्क का एडमिन का एक्सेस लो आप। अरीबा बायर वो नेटवर्क तो का है. एडमिन है आपके हाँ. पास? हाँ तो है. आप अकाउंट में जाके ना आप पहले चेक करोगे कि एडमिन्स में कौन-कौन से यूज़र्स एडेड हैं, राइट? मीन्स ओके. उस एडमिन पे जाके आप देखो, एडमिन्स प्रोफाइल में आपको मैनेज यूज़र रोल्स होगा वहाँ पे। तो विल हाँ चेक हाँ दैट। हाँ. तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो बहुत सारे यूज़र दिखाएँगे। अभी उस यूज़र्स में से कौन एडमिन का बंदा है, फर्स्ट बंदा अगर एडमिन का है तो ही विल एक्ट एज़ अ एडमिन एंड ही कैन डिलीट ऑल द रेस्ट ऑफ यूज़र व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज़ योर यूज़र मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ ओके. आपके पास एक सप्लायर के पास 5 आईडी है, समझ रहे हो? मतलब वो 5 हाँ. लोगों से करे वो एज़ ए हाँ. ओईएम। एंड आप एसएलपी प्रोफाइल में देख रहे हो कि उसका एएनआईडी बना नहीं हुआ है, बट ही इज स्टिल एंड सप्लायर साइड ही कैन सी दिस एएनआईडी इज देयर, राइट? दैट इज योर, यू आर सेइंग दैट इज द टेम्पररी आईडी। इन दिस केस आप क्या करोगे, आइदर यू विल लिंक दैट अकाउंट, टू लिंक दैट हाँ. अकाउंट करना पड़ेगा करेक्ट. आपको कि आपको सप्लायर इनेबलमेंट में जाके उस सप्लायर अकाउंट को ये मतलब इनेबल करना पड़ेगा। यू नो हाउ टू इनेबल द सप्लायर? एनेबल मुझे पता है बट लिंक वाला मुझे पता नहीं है. तो मैं आपको लिंक वाला. दिखाऊंगा, मेरे में लोग हाँ. जाएंगे ना, आई विल शो यू सो हाउ टू डू आई दैट, थिंक यू राइट? आर ऑल्सो गेटिंग दिस टाइप ऑफ इश्यूज, राइट? Yeah. Such kind of error you used to receive such kind of. If you want, I can show you right now what are the solution. One second, let me see. I can. Because Uh, last year we have 18,000 accounts of Amazon were unregistered. okay, और जब okay. उसको देखा तो फिर मैंने बोला गॉड ब्लेस टू एसएलपी कंसल्टेंट नाउ. ही विल बी Okay, एबल टू. that's too much. Means you have a daily basis. You need to take a call with the supplier. You have to fix it anyhow. Otherwise, no, the business will stop for working, right? And they will escalate to your buyer. बहुत ही issue हो जाता है हाँ, वो उसमें। हो रहा है. राइट राइट. पूरा सीएसपी लेवल पे एस्केलेशन है. तो वो सारी चीज़ें होती है, तो आपको इस पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी बिकम एक्सपर्ट इन द सप्लायर साइड एज़ वेल। ऐसा नहीं कि आप बायर हो तो केवल बायर का जानते हो, यू हैव टू ऑल द, जबकि वो सप्लायर को पता होना चाहिए क्या उसमें है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका एडमिन्स का रोल ही सब कुछ एक्ट करता है। लिंक यूज़र आईडी, नहीं. लिंक सो या नहीं, मेरा सप्लायर ही सप्लायर फेसिंग है. अमेजोन मेरा सप्लायर है. ओके, मैं सप्लायर अकाउंट को डील करता हूँ. बायर ओके। का मुझे क्योंकि मुझे एक्सेस है. हुँ। कोई कैटलॉग या कुछ पी टू पी कोई इशू आता है, राइट? हुँ, वो हुँ। मुझे एक्सेस है, तो मैं एडमिन का सुपर पावर यूज करके आई एम एबल टू लॉग इन एंड डू ट्रबल शूटिंग इफ इट इज इन माई नॉलेज, राइट? हुँ, बट इफ हुँ। इट समथिंग वेरी टेक्निकल, देन आई विल रिफर टू इधर क्रिएट अ टिकट और आई विल रीच आउट टू दिस कंसल्टेंट इंटरनली. वो यस। बायर का जो भी कंसल्टेंट, शेयर सर्विसेज का जो भी कंसल्टेंट होगा, उसको मैं रीच आउट करता हूँ फिर कि यार इसको फिक्स कर दो,
राइट। तो मेरा प्रीडोमिनेंटली रोल ही सप्लायर फेसिंग है। मैं लीड हूँ उसका अमेजोन का। और अच्छा अच्छा। अमेजोन जो जो बायर के साथ डील कर रहा है एसबीएन में, अरीबा को हम्म। अब एसबीएन बोलते हैं, सब अच्छा। एसएपी बिजनेस नेटवर्क। तो हम्म। वो फिर मैं डील करता हूँ उनको। तो अभी बहुत सारा इशू आ रहा था एसएलपी में, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा मैंने बोला यार सीखा जाए ये काम ना, थोड़ा हाथ हाँ गंदा भी किया जाए ताकि थोड़ा पता चले अंदर काम कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन वाला काम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ स्क्रीन का। हाँ, एक सेकंड, लेट मी नो। हाँ यू कैन सी माय स्क्रीन अभी कि हाँ एब्सोल्युटली। या तो रुको, मैं भी आपको ये दिखाता हूँ। लेट मी शेयर दिस बाय नेटवर्क का थोड़ा सा, इफ आई कैन लॉग इन, तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इसमें क्या होता है। तो अब ये एस फोर हाना और इसका जो माइग्रेशन या इंटीग्रेशन होता है बिजनेस नेटवर्क से, इफ हम्म कस्टमर इज ऑप्टेड फॉर कॉमर्स ऑटोमेशन, राइट, हम्म सप्लाई चेन कोलैबोरेशन, so that हम्म। part also you deal with that? या अभी क्या होता है ना कि जो भी आपका देखो, देयर इज ए अपस्ट्रीम मॉड्यूल और डाउनस्ट्रीम दोनों का है ना, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपको किस मॉड्यूल के लिए डील करना है। सपोज आप यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपस्ट्रीम, सो देन यू नीड नॉट टू लुक ऑन द कॉमर्स ऑटोमेशन साइड, बट द मे, मेरा अभी 3 मंथ वहाँ ज्वाइनिंग है। जब मैं सूरज को एक्चुअली बता रखा है ऐसे रीजन को, आफ्टर 3 मंथ आई मूविंग टू दैट टीम एक्चुअली, ये कॉमर्स ऑटोमेशन वाला, राइट। सो इसलिए पूछा मैं आपसे। आई थिंक सूरज नेटवर्क का इश्यू है कुछ। सूरज देयर, राइट? You're on mute, buddy. Let him ping me once. Hello. Hello. या हाय, सॉरी अगेन, माय नेटवर्क इज ऑलवेज No, ओके, no worries. शेयर माय स्क्रीन। हाँ, तो मैं आपको, आपने कहाँ तक सुना? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे कॉमर्स ऑटोमेशन का ना। Yeah. So after 3 months, I'm joining that team actually. ऑलराइट, Material ग्रेट। management वाला team. ठीक है, तो आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है। डोंट बहुत बहुत बहुत। टेक इट अच्छा। सो ये देखो, आपका ये जो प्रोफाइल है ना, ये बिजनेस नेटवर्क आपका, ठीक है। ओके। अ, ये आपका बेसिकली सप्लायर का बिजनेस नेटवर्क प्रोफाइल है अंडर टेस्ट पे। सो मैंने जैसे लेट मी स्विच एज माय डिलॉइट, दिस इज माय डिलॉइट अकाउंट, राइट। सो आई राइट। सी अभी क्या होता है ना, ये जो अकाउंट है ना, ये आप देख लो बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। हम्म। सप्लायर के क्वेश्चनर होंगे ना, तो वो आपका अरीबा प्रपोजल एंड क्वेश्चनर में आता है। ये आपको पता होगा पहले से, ये वाला सेक्शन। हाँ, ये पेज पता है मुझे, बट मैं डील नहीं करता हूँ उसमें। आई डोंट डील विद ठीक दिस टैब, ओनली विद है, ओके। नेटवर्क। तो क्या होता है ना, जब भी सप्लायर बिजनेस नेटवर्क पे आएगा ना, तो वो ऐसा अरीबा क्वेश्चनर पे आना पड़ेगा उसको कि टू एक्सेस दैट व्हाट एवर द रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर, सोर्सिंग का, ये सारी चीज़ें यू हैव टू शोकेस हियर ओनली। सो देखो अभी इसमें कुछ दिखाना चाहिए, लेट दो। ओल्ड लोग अभी दिखा रहे हैं अरीबा का। या देखो, जैसे ये सप्लाई रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर आना, इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। तो वैसे ही आपका आएगा, आपका जो भी सोर्सिंग का रहेगा तो इवेंट्स के अंदर आएगा, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चनर रहेगा तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपको इधर आएगा यहाँ पे, और आपको यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, यू हैव टू जस्ट ओपन दिस वन एंड यू हैव टू, इसे कंप्लीट हो गया, मैं ओके। आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके। तो कैसे दिखता है इसे, ठीक। तो ये इवेंट उनको ऐसे दिखेगा, तो ही विल कम टू द इवेंट मैसेज पेज में, ऐसा करके वो पूरा इनिशियल देखेंगे वो क्या क्या है, मैसेज आता है, पहले वो मैसेज चेक करते हैं कि क्या मैसेज आया है, किसके लिए आया है। ये तो ओके। रजिस्टर है ऐसा दिखने का, तो सारा फिर वो आपको पार्टिसिपेट करके इधर से रिस्पॉन्स करना होता है उनको, ठीक है। ओके। और जो आपका अभी मैं अब आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो अकाउंट का लिंकिंग कैसे करते हैं ना, इसी यहाँ पे आप आओ, बिजनेस नेटवर्क अगेन।
ठीक है ना। यहाँ आप देखो, ये जो आपका मेन बिजनेस नेटवर्क है ना, ये इधर होता है, दिस इज योर हम्म। अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, लिंक यूजर आईडी है, स्विच अकाउंट है, टेस्ट है, सिस्टम ओके है। ओके। तो इस केस में क्या करते हैं आपको कि यहाँ पे आके आपको पहले तो आपको ये सारा चेक करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस के लिए। सपोज आप लोग कॉमर्स ऑटोमेशन का कुछ ऑर्डर्स चेक करना चाहिए, यू कैन आल्सो चेक इट फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करेक्ट स्टार्टिंग में करेक्ट ईमेल करेक्ट। आपको बदलना है, मान सप्लायर बोलता है कि आई डोंट वांट टू टेक दिस ईमेल अहेड, आई वांट टू चेंज दिस ईमेल, सो आपको इधर आके ये चेंज करना पड़ेगा। हम्म। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको पर्टिकुलर सेशन में दिखाऊंगा कंप्लीटली क्या क्या कैसे हाँ कैसे ठीक है क्या, ठीक ठीक है ना। है। ओके। ये डिटेल्स पूरा सप्लायर पोर्टल का अलग ही है, मतलब बिजनेस नेटवर्क का सप्लायर पोर्टल, राइट। सो लेट्स हाँ। गो बैक टू दिस आवर सेशन। सो आई जस्ट चेंज दिस नेम। यू कैन सी माई द रजिस्ट्रेशन पेज ना अभी। नहीं, अरीबा दिख रहा है। ये वाला रीस्क्रीन मेरे को बार बार इसको स्टॉप शेयरिंग करके। हम लोग टीम्स में भी स्विच कर सकते हैं अनिल। आई थिंक वो हाँ कंफर्टेबल है थोड़ा। हाँ, वो एक बार मैं इनसे बात करूंगा सूरज से ना, सो ही विल आल्सो उसी पे शेड्यूल करने के लिए बोलूंगा मैं उनको, तो हाँ। करेंगे इसमें ऐसा करके। तो लेट मी ओपन दिस डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये आप देखो इधर, ये मैंने डाल दिया इंडिया, एड्रेस डाल देता हूँ कुछ भी फिलहाल के लिए, दैट इज सिटी डाल देते हैं। Why is it not taking any answer? I'm just registering myself, हाँ, ऐसे करके। ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो आई विल पुट माय डिफरेंट अकाउंट, कैमल 25। टेस्ट हम लोग का ये होता है ना, तो सी दिस ईमेल ऑलरेडी गॉट सेंड टू दिस ईमेल आईडी पार्टिकुलरली, बट मेरा यूजर नेम क्या होगा ना, उसमें मैंने अपना यूजर नेम नया वाला डाल दिया, एनएल कैमल 25 करके। ओके। अभी कि गेट बैक इफ यू डोंट रिसीव दिस ईमेल आई नीड टू चेक दैट ईमेल। अभी मैं क्या करूँगा, अपना ईमेल ओपन करूँगा। लेट्स सी दैट डिड आई रिसीव, या रिसीव। यू कैन सी माय ईमेल राइट। नहीं, पहला वाला ही आ रहा है कि इफ यू डिड नॉट रिसीव द ईमेल। हाँ, अब दिख रहा है, अब आ रहा है। है ना, या तो ये है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस नेटवर्क, ये ईमेल आएगा आपको, यू जस्ट कंफर्म योर ईमेल। या जैसे आप लॉगिन करोगे ना इसमें, तो ये इस तरह का, ये क्या आ गया, ये तो मेरा ये वाला बंद करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, दिस वन इज मैचिंग टू मी। इसको लॉग आउट करो। कितने सारे विंडो खुले रहेंगे ना, तो रीबा का एक प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट लॉग आउट दिस विल नॉट वर्क लाइक दैट। अब मैं क्या करूँगा ना, वही ईमेल पे जाऊँगा डायरेक्टली, एंड आई विल व्हाट आई विल डू ना, इसमें ओपन करेंगे।
You see this one, Yeah. Srijan Institute and everything. So now you're complete and actions requested by the customer, ये सारी चीज़ होगी. अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा. अब ये मेरा पेज ओपन हो गया. इसमें क्या मैंने अपना यूजर नाम डाला था, NLK में 25 cmail.com. अभी आपका जीमेल दिख रहा है. अभी जीमेल ही आ रहा है क्या? ओके फाइन. हाँ. ये मैंने लॉगिन किया. ओके फाइन. हाँ, ये अब ऑलमोस्ट. ठीक है, ठीक है. हाँ. ये रिमाइंड मी लेटर. आई विल नॉट सेलेक्ट नाउ कैटेगरी फॉर नाउ. ये आ गया मेरा पेज ओपन होके. ठीक है. ये इसलिए डायरेक्टली इधर इसलिए आ रहा है. देखो आप, यू कैन सी दिस डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने को बोल रहा है मेरे को ना, जो मैंने अभी हम्म. इसको रजिस्ट्रेशन बोला. अगर इधर से जाना चाहोगे तो यू कैन आल्सो गो बैक टू द डैशबोर्ड एंड देन हम्म. आपको ये इवेंट ओपन करना पड़ेगा. सपोज आई एम क्लिकिंग हियर. ठीक है. अभी मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ थ्रू दैट वन. सो आई एम जस्ट रिमाइंड लेटर दिस वन. एंड ये सब फिल करोगे ना तो पूरा आपका प्रोफाइल किस कैटेगरी में डील करते हो, क्या प्रोडक्ट है, क्या है, नहीं ऐसा. हम्म. हम्म. देखो अभी क्या आ रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन इसको सप्लायर को मिल गया. यू कैन सी हम्म. the Ariba proposal. You cannot see in the business network. You have to always come here and come to the Ariba proposal and questionnaire. So this ओके. registration it comes in a form of the questionnaire. So this is the supplier registration questionnaire. You हम्म. just open this one. We'll open it and we'll fill all the mandatory people. Now supplier wants to update all these things, right? So region, suppose मैं इधर डाल देता हूँ, फिर अपना सभी fill करेगा supplier side. Pin code. We'll see this. So we'll see this. Country. These all are mandatory because you have to fill all these fields, otherwise. वेबसाइट में मैं किसका वेबसाइट डालूँ? ओके चलो मैं अभी डिलीट है. ओके दिस कॉन्टैक्ट्स आर नॉट मैंडेटरी. यू कैन सी दिस आर चाहते तो ऐड कर सकते हो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स. इट या. नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ. बट ये पैन्स वगैरह ये सारा चीज़ें बहुत मैंडेटरी होता है. यस दिस इज मैंडेटरी. अब आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा इधर. ये कुछ भी अभी डाल देते हैं. लेट्स सी इट विल एक्सेप्ट या नॉट. ठीक है कुछ भी डाल दिया था. अब ये पैन कार्ड जो डालोगे ना तो अटैचमेंट के लिए पूछेगा. फॉर नाउ आई एम नॉट अटैचिंग एनीथिंग फॉर नाउ. सी हम्म. GST number, but it is mandatory GST number. Then we have to provide the GST number as well. So this ये आप पूछोगे कि ये क्वेश्चंस के लिए जैसे मैं आर यू GST रजिस्टर्ड, अगर आप नो कर रहे हो नहीं आ रहा, वैसे चेकलिस्ट नहीं. ठीक है. ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको टेम्पलेट्स में ये क्वेश्चन के साथ ऐसा चेकलिस्ट लगाया गया. जब आप टेम्पलेट में जाओगे ना तो सपोज जिस क्वेश्चन को ओपन करोगे आप, सो यू कैन आल्सो लिस्ट योर चेकलिस्ट कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मतलब आपको इसमें मल्टीपल 5 चेकलिस्ट डालना है. ठीक है. तो आप यू कैन आल्सो ऐड द 5 चेकलिस्ट, राइट. अभी इसमें एक ही आ रहा है. अगर आपके पास पैन कार्ड यस करते हो अगर आप टेम्पलेट में, तो वहाँ पे आपने यस किया हो तो उसमें कंडीशन डाला होगा. और मैं यस करूँगा तो ये फील्ड मेरे को ये क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है. अगर मैं नो करता हूँ यहाँ पे तो ये फील्ड हाइड हो जाएगा. समझ रहे हो? तो ठीक है. ये सब दे आर कमिंग फ्रॉम द टेम्पलेट itself. सो यस किया मैंने, नो वो करता हूँ. 5 वाला व्हाट यू मेंशन अबाउट 5 थिंग, 5 चेकलिस्ट क्या बोला आपने अभी? ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये क्या बोल रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद GST रजिस्टर. ये एक तरह का ओके. क्वेश्चन. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. इन ओके. दिस ओके. क्वेश्चन यू कैन ऐड मल्टीपल चॉइस ऑफ लिस्ट. ओके. राइट. ये मतलब ये अभी मैं यस टू नो अनस्पेसिफाइड दिखा रही. यू कैन आल्सो ऐड मल्टीपल चॉइस ऑफ लिस्ट. अगर आप ओके. ओके. नो करोगे तो क्या आएगा, यस करोगे तो क्या क्वेश्चन देना चाहिए, इसको डिस्प्ले करना चाहिए. ये आपको ओ. टेम्पलेट फिक्स किया हुआ है. समझ रहे हो? ठीक. ओके. ओके. ये सारी ये चीज़ें. टेम्पलेट नील टेम्पलेट आप दिखा सकते हो कैसे बनता है? बस मुझे एक को देख, मतलब जब ये इम्प्लीमेंट होता होगा SLP, राइट, वेन एवर दे आर कस्टमर इज डिप्लॉइंग SLP, तो उसका फर्स्ट स्टेज मतलब उसका एंड टू एंड, राइट? एक बार आप हाँ थोड़ा साइकिल दिखा सको तो. हाँ मैं वो दिखाऊंगा आपको. एक सेकेंड. ओके. वो टेम्पलेट का हम लोग ने सेशन ही पूरा अलग रखा क्योंकि टेम्पलेट साइड में क्या है ना, वो आपको सारा कुछ अच्छा ठीक है, मतलब. ठीक है, सेक्शन है. ओके. ओके, मैं बस हाँ, देख. ठीक है. आपने वो आपको मैंने आई थिंक वो नहीं भेजा क्या, क्या बोलते हैं आपको,
नहीं, मुझे भेजा आपके तो एक ही आया था, बहुत पहले आया था, अगर कुछ है तो आप भेज दो। अब मैं मैं भी एक आपको बार थोड़ा अपना ग्राउंड वर्क कर लूँगा। हाँ, मैं अच्छा मैं सूरज को बोलूँगा ना वो फॉरवर्ड कर दो आपको कि वो ईमेल है जो इसमें कंटेंट्स में क्या-क्या है ना, मैंने एटलीस्ट दे रखा है उसमें। हाँ, तो अच्छा रहेगा थोड़ा, मतलब एक हेल्पफुल रहेगा बहुत मेरे लिए। मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो ना, देखो मैं आपको वो वाली सारी चीज़ें टच कर दूँगा जो आपके लिए एज़ ए कंसल्टेंट, एज़ ए एएमएस कंसल्टेंट सभी आपको ज़रूरत होगी। तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं कुछ पार्ट थैंक ऐसे यू सर। व्हाटएवर आई नो आई या विल टेल यू एवरीथिंग, राइट? तो हुँ। इसके लिए आप सोचो मत। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ छोड़ दूँगा। मतलब ऐसे जो भी मैं अपस्ट्रीम में जानता हूँ, डाउनस्ट्रीम में एवरीथिंग आई विल टेल यू बट स्लोली स्लो राइट? इफ यू नहीं, वांट नहीं, मेरा एक्चुअली नील, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है राइट, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हर जगह हो रहा है, करेक्ट? राइट तो हाँ, इस वजह से मेरा प्लान है कि जनवरी में मैं मतलब बाहर का ट्राई करूँगा। मैं आपको ऑन द फेस बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये है कि जितना हो सके राइट, व्हाटएवर हुँ, आई कैन अब्सॉर्ब, स्पेशली द टेक्निकल पार्ट, राइट, राइट, राइट। द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट राइट। हुँ, बट ये भी है कि थ्योरेटिकल भी अच्छा ही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए राइट? तो ये है मेरा इंटेंशन। तो अभी आप जो भी बाहर प्रोजेक्ट पे जाते हो ना राज, कम तो अगेन? इसमें क्या होता है ना कि बाहर जो भी प्रोजेक्ट पे आप जाते हो ना, मोस्टली क्या राइट। होता है, उनके पास एएमएस का ही प्रोजेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर एएमएस प्रोजेक्ट, ठीक है? ओके, ओके। सऊदी के क्लाइंट के पास चले जाओ, दुबई में चले जाओ, मतलब ये सारे जो भी क्लाइंट आपको बोलेंगे एएमएस सपोर्ट के लिए बोलेंगे। नहीं तो आपको बोलेंगे कि आपको वैलिडेट करना है, जो भी आपको टेम्पलेट्स वैलिडेट कैसे करना है, क्या-क्या हम लोगों ने सही गलत किया है ना, मीन्स हाँ, लॉग आउट वैलिडेट करना, वो सारी चीज़ें रहती हैं। ओके। तो मैं आपको दिखाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट हाँ, आप ओ उसके लिए ओ नहीं, आप ओ टेंशन फ्री बस ये रहो कि आप यू जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट राइट? आपको थोड़ा लगेगा कि डेफ़िनिटली। टाइम लग रहा है, ये सब तो मैंडेटरी डिटेल्स है। मैं इसको सबमिट करता हूँ। देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम रिक्वायर द कंप्लीशन। अब देखो इसमें रेड हाइलाइटेड कहीं ना छूटा होगा हमारे से। कंट्री रीजन कुछ बोल रहा है वो, हाँ। तो ये सारी चीज़ें और आपका प्लान ठीक है, मतलब आप इफ़ यू आर गुड टू गो यू कैन डेफिनिटली यू कैन अप्लाई एंड गो। क्योंकि क्या मेरे को होता हाँ, है जून-जुलाई से मेरा प्लान है कि सर्टिफ़ाइड होके फिर ना इंटरव्यू देना मैं शुरू करूँगा। मेरा हाँ, हाँ, प्लान है। हाँ, दैट्स गुड एक्चुअली। मेरे काफ़ी दोस्त लोग डेलॉयट, केपीएमजी, एक्सेंचर में लग गए। तो हाँ, आई थॉट दैट एंड दे आर गेटिंग अ गुड पैकेज टू बी ऑनेस्ट। सो आई थॉट बॉस, आई शुड दैट्स यूटिलाइज़ दिस नाउ। Yeah, you can do the same thing. It's not like, see, there's nothing. If you learn something, you can, you can learn the things and you can get into anything, right? It is not like that कि आपको करेक्ट। ये आपने अगर इस पे पहले काम नहीं किया तो you cannot do this. Nothing like that at all. हुँ, समझ हुँ, लो वो सारी चीज़ होती या है। मेरे तो कुछ ऐसे कनेक्शन हैं, दे आर अर्निंग 4.5 lakhs, 4 and 5 lakhs, half lakhs a month salary या as well. So करेक्ट, करेक्ट। तो वो भी लगता है कि हाँ दे आर डूइंग वेरी वेल बट दे आर वर्किंग ऑन द यूएस क्लाइंट्स एंड ऑल दैट राइट, सो वो सारी चीज़ें करेक्ट। अब उनको यहाँ पे टैक्स भरना नहीं पड़ता, दे डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट, सो दे डू दैट्स ऑल दिस थिंग्स। So you take care of Ariba only or other stuff like Hana, Jaguar, Coupa? नो मोस्टली आई टेक अरीबा एज वेल, अरीबा ही का ज़्यादा मैं देखता हूँ, नॉट फॉर Okay, अरीबा सेंटर। तो ये सब चीज़ क्योंकि मेरा को जब भी मैं किसी क्लाइंट को अप्लाई करता हूँ ना, अप्रोच करता हूँ, वी जस्ट गो फॉर एज ए अरीबा प्रोफाइल, नॉट फॉर स्कोर प्रोफाइल एंड okay, ऑल okay. ऐसा है। So you deploy everything like upstream, downstream, or SAP related as well? या मतलब आप बोल सकते हो जैसे कि मैंने अपस्ट्रीम में सारे मॉडल्स को डिप्लॉय किया है, जैसे आपका एसएलपी सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड डाउनस्ट्रीम में बोलोगे तो मैं कमर्स ऑटोमेशन पे थोड़ा सा मैंने उनको सपोर्ट किया था, बिकॉज ऐसा क्या होता Okay. है ना, आप डिलाइट प्रोजेक्ट पे रहते हो तो आपको इधर भी करना है थोड़ा उधर भी करना है, समझ लो। हाँ, राइट, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इस पे जितना आप हाई चार्ज करोगे यू हैव टू डिप्लॉय इन मल्टीपल प्रोजेक्ट, इट्स लाइक दैट सो। Hmm, I think Suraj left the call. अच्छा फिर चलो चलेंगे क्या, क्लिक ऑन द बैंक इन्फॉर्मेशन वी विल आल्सो फॉलो इन सेकंड। तो सूरज को कैसे, हाउ डू यू नो द सूरज, मतलब कैसे यू जस्ट मेरा एक्चुअली कांटेक्ट। कज़न, मेरे कज़न ने किया था एक प्लांट मेंटेनेंस का मॉड्यूल इनसे। अच्छा तो अच्छा। मेरे को था दिमाग में मुझे करना है यार। तो मैंने हुँ, सूरज को बोला मेरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, एक्सपेक्टेशन ये है उससे, मतलब जो भी आप कोर्स का ट्रेनर है,
तो पहले तो हम्म। काफ़ी मतलब आई थिंक कई लोगों ने मना कर दिया, जो भी है मुझे पता नहीं क्या स्टोरी है। अच्छा तो बाद में फिर क्योंकि मैंने इनको कंटेंट दिया था एक्चुअली अपना वाला, अच्छा अच्छा। राइट। मैंने बोला चलो अच्छा आप इन आउट, क्योंकि एक जब तक हाथ जलाते नहीं हो, राइट, वो हम्म। सीखने को नहीं मिलता। क्लाइंट का वही। डंडा जो पड़ता है वो अलग ही रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि क्लाइंट साइड का आप काम करोगे डेली बेसिस आपको एरर आएंगे, समझ रहे? एक क्लाइंट का काम हाँ, एक बार भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो ये सब राइट। चीज़ें। मुझे अभी मतलब करूँगा मैं आपसे मतलब प्रिपरेशन, राइट, करना है हम्म। यार। अब देखो आप सीखोगे, आपको कोई देखो रेफरेंस में क्या हुआ कि इफ़ यू आर गुड इनफ सो आपको रेफर भी किया जा सकता है, समझ रहे? इंटरनली डाल देंगे कि हाँ, अभी एचआर कांटेक्ट करके उसे इंटरव्यू इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग का भी इंटरव्यू सेशन भी होता है, राइट? सो एज ए कंप्लीट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको ईयर में आपको 3-4 इंटरव्यू आपको करना है, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। वो सब करना पड़ता है, सब सारी चीज़ें। और एक देखो ये अब सबमिट हो गया, नाउ इट्स पेंडिंग फॉर द अप्रूवल फॉर द सप्लायर साइड, मैंने सबमिट कर दिया एंड इट विल गो फॉर next approval, right? Now let's go back to this page. This is my seed client here. Start this one. Okay, site corner like this. Give me a minute. I will just log in again. तो आपको तो सूरज इसमें मतलब ये राज इसमें अच्छा खासा मिला हुआ है आपको, ये मतलब कंट्री लीड हेड तो इज अ वेरी बिग पोजीशन नाउ। You have a हाँ, good, राइट, राइट, राइट। yeah, so you have to be responsible because it's a too much work definitely would be there, right? हाँ, मतलब इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक। इनिशियली आई वाज डीलिंग विथ ओनली नेमर कस्टमर Mm-hmm. from last 1.5 2 years. So Neymar in Canada, US, Mexico. Later on, once they made me global lead, Mm-hmm. उसमें पूरा ये एपैक पूरा आ गया, ईमिया आ गया। वो Oh. थोड़ा सा ये ईमिया वाले बड़े परेशान करते हैं यार। लोग क्योंकि तो उनका समझ में भी नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन अजीब ही रहता है। वो थोड़ा रहता है उनका। तो अभी फिर मैं दूसरा एक्चुअली आई वाज अप्लाइंग समवेयर एल्स एज वेल। So अच्छा। 2 3 options I got, so I opted for this commerce automation one because उसमें I heard that material management comes in the picture and कॉमर्स। that is उसमें स्कोप ज़्यादा अच्छा है थोड़ा। हाँ, वो तो है आपको उसमें। भाई अभी क्या है ना कि किसी भी मॉड्यूल के लिए ना आप अपने आप को किसी मॉड्यूल के लिए स्टैंड करोगे ना कि आई एम गुड एट दिस मॉड्यूल ना, तो यू कैन लर्न इट। इट इज़ करेक्ट। आपको बस उसपे सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सपोज़ किसी क्लाइंट के पास जाते हो ना, तो आपको आपको हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग जो प्रोफ़ाइल दिखा के जाते हैं ना अभी, तो हम लोग यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द प्रोफ़ाइल। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप एक में काम जानते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लर्न एवरीडे, राइट? सो वो सारा चीज़ें होता है आपको। हाँ, ये देखो आपको ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन सप्लाई ने सबमिट किया ना, तो ये अप्रूवल के लिए आ गया एज ए बायर के पास, ठीक है? इट इज आल्सो शोइंग दैट पेंडिंग फॉर अप्रूवल। नाउ बायर क्या करेगा? बायर एक्ट एज, यहाँ पे बायर के पास अप्रूवल का बटन होगा, यहाँ पे टेक एन एक्शन। ही विल टेक एन एक्शन एज ए ओनर, सो आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो आई विल जस्ट अप्रूव दिस। सो देखो अभी मैंने आपसे बात किया था ना सप्लाई रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर्स में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, देखो ये इंटरनल क्वेश्चनेयर का सारा क्वेश्चन है इधर, ठीक है? ये आपका ये ओके। सब फील्ड वाली वैल्यू है। अकाउंट ग्रुप आपका फील्ड हो गया, आपका कंपनी कोड आपका फील्ड हो गया, ठीक है? रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें फील्ड में मैपिंग होती है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ें डेटा ईआरपी को चला जाएगा। यू जस्ट वेरीफाई ऑल द डिटेल्स एंड सबमिट फॉर द सेम। सो आई जस्ट वेरीफाई। कॉमर्स ऑटोमेशन का आपके पास कुछ किसी के से आपने बीबीपी वगैरह कुछ ले रखा है कि नहीं? मेरे पास है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन है। अच्छा अच्छा। मैं आपको कुछ बीबीपीज दे दूंगा, वो आपके लिए ईजी रहेगा थोड़ा सा कि हाँ, यू कैन दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेट सर। कि इसमें कैसे काम होता है ना, यू विल गेट टू नो स्टेप बाय स्टेप। आपने कभी राइस भी डिप्लॉय किया है किसी कस्टमर के साथ? राइस ग्रो कुछ?
नहीं, राइस के साथ मैंने नहीं, मैंने कितना है ना कि मैंने कितने क्लाइंट्स मैंने वियतनाम के क्लाइंट्स के साथ, वीएटएल के साथ काम किया है, समझ रहे हो? सी ओके। है, नियोम क्लाइंट आपने सुना होगा, नियोम नियो। द बिग प्रोजेक्ट ऑफ नियोम। ओके। तो इज द वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स अ वेरी बिग। तो उस पे हम लोगों ने काम किया है, तो मतलब उस प्रोजेक्ट में एक ही कंपनी नहीं रहती, डिलाइट, टीसीएस, आईबीएम, मतलब जितनी कंपनीज है ना, दे आर ऑल आर देयर टू सपोर्ट। मतलब बहुत बड़ा ओके। बिजनेस, उनका इज अ वेरी बिग बिजनेस। आपको ये भी हो सकता है कि आप डिलाइट में तो आपको पीडब्ल्यूसी के साथ काम करना पड़ रहा है, ईवाई के साथ काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? ये हाँ, मैं सारी कर चीज़। रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं डेलॉइट, मैं सब है मेरे साथ काम का, क्योंकि अमेजोन का थोड़ा यही है कि लाइक all the third parties, all these big four players, right? They work with their customers. आई थिंक अमेजोन ऐसे सेलर अकाउंट की तरह काम करता है ना, वो आपका ऐसा रहेगा कि आप हाँ, एक सेलर अकाउंट को पूरा मैनेज कर रहे हो, यू हैव टू correct. सी। So Amazon, yeah, Amazon what they have enabled spot buy actually. तो अच्छा। और स्पॉट बाय बहुत ही कम कस्टमर के पास है अभी। नेमर में तो एक्चुअली डिकमीशन, अभी अच्छा। स्पॉट बाय है ही नहीं। ईमिया में गेटिंग सनसेट 26-27 में हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। ओह सो ग्रेट। उस वजह से एक यूनिक फीचर है अमेजोन के पास स्पॉट बाय। ऑलराइट। तो मैं वो स्पॉट बाय एनेबल वाला फीचर की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा है। आई हैव द प्रिविलेज दैट आई वर्क विद एब्सोल्युटली, इट्स अ अक्रॉस वेरी, द कस्टमर। yeah, first of all, you are with Amazon, that is very good thing. That is it's a product based company, right? It is very good, so it is better than the service one. ऑलराइट, सो इसे आप देखो, यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीट हो गया आपका। इट मीन्स द सप्लायर इज नाउ रजिस्टर्ड, राइट? ही कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड अभी तो ईआरपी सिस्टम का मैंने उनसे लिया नहीं, तो जैसे ही वो ईआरपी से इंटीग्रेट होगा ना, ये आपका नंबर यहाँ पे, वो आपका नंबर एक बस जनरेट हो जाएगा, ये टेम्प्रोरी वाला हट के वो वाला उनका नंबर है। ये ईआरपी का नंबर आप जाके यहाँ पे इसको सिस्टम में आप इसको चेक करोगे वेंडर डिस्प्ले में, जैसे कि आपका, आपको पता है वेंडर डिस्प्ले करने का क्या टी कोड है वहाँ पे? XK03 आप यूज़ करते हो कि परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से MK03 यूज़ करते हो? कुछ नहीं आइडिया? नहीं, नो आइडिया। अच्छा, नहीं आइडिया। तो क्या होता है ना कि एस फोर सिस्टम में, एस फोर में जाओगे ना, तो SK03 जो होता है सेंट्रल लेवल पे वेंडर को डिस्प्ले करता है, एंड ओके। MK03 जो है वो परचेजिंग लेवल पे आपको वेंडर डिस्प्ले करेगा। तो ये नंबर जो आपका यहाँ पे जनरेट होगा ना, ये ओके। आपको, ये देखो, ये नंबर आपको वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो डिटेल्स, जो जो मैंने इस SLP में डाला है ना अरीबा में, दिस डिटेल्स हम्म। यू कैन वेरीफाई ओवर देयर, समझ रहे हो? मतलब ये सारा डेटा वहाँ पे आपको यहाँ से सिंक होके चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे एक ईआरपी सिंक का बटन आता है, दिस दे हैव डिसेबल बिकॉज़ दिस इज़ ऑटो सिंकिंग। ओके। वंस यू मेक इट ऑटो सिंकिंग फ्रॉम द टेम्पलेट साइड, आप देखोगे यहाँ डिसेबल हो जाएगा, और नहीं तो मैनुअल करोगे तो यहाँ पे सिंक नाउ का क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे हम्म। टेम्पोररी आईडी जो बात करे थे अरीबा नेटवर्क का, ये जनरेट हो गया है एज़ अ टेम्पोररी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसएलपी का आपका ये प्रोसेस फ्लो हो गया, ठीक है? नाउ हम्म। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारा टेम्पलेट हो गया, नाउ ये रजिस्ट्रेशन हो गया। सपोज़ क्लाइंट पूछता है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन के बाद क्वालिफ़िकेशन भी देना है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन हम्म। भी करना है, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड सप्लायर भी डालना है। तो उस टेम्पलेट हम लोग उस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में देख लो, क्वेश्चनेयर है, तो क्वेश्चनेयर की जगह यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन कहा जाएगा। तो आप ओके। इसको, ये क्लाइंट स्पेसिफिक बोले कि नहीं मेरे रजिस्ट्रेशन तक आई एम इनफ, बट बायर कह रहा नहीं, मैं आपको क्वालिफाई भी करना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ 100 ऑफ कैटेगरी, आई ऑल्सो वांट टू क्वालिफाई पार्टिकुलर बेस्ड ऑन द कैटेगरी बेस। तो उसमें ओके। दो या तीन क्वेश्चन रहेंगे, डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई करने को, और कैटेगरी वैलिडेट करने को। तो वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहते हैं बस, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आ जाएगा सप्लायर क्वालिफिकेशन। तो वो भी एज ए इंटरनल अप्रूवल जाता है, तो बायर के पास जाएगा तो बोलेगा कि मैं इस कैटेगरी के लिए इसको वेरीफाई करता हूँ फॉर दिस पार्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है? उसके बाद आपका ओके। प्रेफर्ड सप्लायर आता है, तो प्रेफर्ड सप्लायर में क्या होगा, जो कैटेगरी के लिए आप उसको क्वालिफाई करोगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एज़ ए प्रेफर्ड सप्लायर में आ जाएगा। तो जब भी आप उस पार्टिकुलर कैटेगरी में प्रोक्यूरमेंट करने जाओगे, तो वो आपको ऑलरेडी वो सप्लायर डिस्प्ले कर देगा नाम में, कि सृजन इंस्टीट्यूट इज़ फॉर क्वालिफाइड फॉर द सप्लाई। तो वो सारा चीज़ें हैं। तो ये आपका सप्लाई रजिस्ट्रेशन का हो गया, और मैं टेम्पलेट साइट से आपको मैं दिखा दूँगा जब हम लोग जाए बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे। सो विल सी द टेम्पलेट एंड ऑल एवरीथिंग, सब कैसे रिक्वेस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन है, क्वालिफिकेशन, कैसे टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ फॉर योर इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? राइट, राइट। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फॉर नाउ ओके। यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक? आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं एसएलपी रिलेटेड, या अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है आपके पास वैसा? मेरे पास मतलब मैं सर्च करूंगा तो मिल जाएगा, बट आपके पास है तो भेजोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं मैं एटलीस्ट। आपको बीबीपी एक भेज दूँगा मैं सूरज को, ठीक है ना? आप उनसे एक बीबीपी ले लेना,
एटलीस्ट गो थ्रू करना ना, कि कभी आपको किसी तरह का क्वेश्चन हो बीबी के थ्रू ना, बीपीपी के थ्रू ना, तो आप उसको पूछ सकते हो कि ये कैसे होता है, ये क्यों क्लाइंट को हमने दिया, ये क्यों नहीं दिया, समझ दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो आई फॉरवर्ड टू दिस डॉक्यूमेंट।